Gopi Jana Vallabha Yasodhanandana Vrajajana Yasodhanandana Vrajajana Yamuna Tira Vanata Yamuna Tira Vanata Radha Madhava Kunjabi Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajajana Yasodhanandana Vrajajana Yamuna Tira Yamuna Tira Jai Radha Madhava Radha Madhava Shira Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shira Jaya Radha Govinda Radha Govinda Shira Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shira Jaya Lalita Visakha Jaya Radhe Shyam Lalita Visakha Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Go Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Go Hari Bol Hari Bol Hari Bol Go Hari Bol Jai Gaur Sitana Pramanande
Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Gopal Krishna Goswami Tami Prabhupada Sahajya Yapakwa Shabhati Gacha Acharam Kirvashadu Bhagavate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhisesa Sunyabhati Paschatya Desatarine Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamaya Dadati Swapadhantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaisnavamscha Sirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Pidana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakamnitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamhami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kipasindubhya Evacha Patitanam Pavadekyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, one more time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 6. The demon Putana killed. Translation. Chapter 6, text 24 till 29. Go ahead, translate what I said. ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। भगवान कृष्णकर तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी यादधानी तथा पुष्पांडा नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शक्ति है
तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्टात्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसे दाहिने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे अनुभवी दुष्ट ग्रहों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं। भगवान श्री विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान श्री विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। Finish? And the purport, text 29? Purport also? Read it. तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे आदि हैं और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव विभक्त करते हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूपों वाले श्री भगवान वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, अपितु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय श्री विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान श्री विष्णु एक हैं, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप हैं, जिनसे वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते, तो एकमात्र भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु नामोच्चारण और भगवान श्री विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णु आराधनम परम, पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर श्री विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्ट आत्माएं सताती हो, किंतु उसकी रक्षा निस्संदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्कृति है, औषधि चिंतयेत विष्णु। यहाँ तक कि वो दवा खाते समय भी श्री विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं होती। भगवान श्री विष्णु असली रक्षक है। यह भौतिक जगत दाव से भरा हुआ है, पदम पदम यद विद्वान। अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर श्री विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कीर्तनिया सदा हरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तथा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम गति। Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Again, we're reading here from Srimad Bhagavatam, Canto 10, the Summon Bonum, Chapter 6, the killing of the demon Putana, and text 24 till 29. आज हम 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय जिसका शीर्षक है राक्षसी पूतना का वध, इसके श्लोक क्रमांक 24 से 29 की चर्चा कर रहे हैं। So these are a series of prayers from the gopis because Krishna just killed Putana, the demoness Putana. तो ये गोपियों के द्वारा कुछ प्रार्थनाएं हैं। ये कृष्ण ने जैसे ही पुतना को मारा, उसके तुरंत बाद मातृभाव की गोपियों ने इस प्रकार की प्रार्थना की। She is the first demon that Lord Krishna killed. ये प्रथम राक्षसी है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। In her previous life, she is
Ratnamala. वो अपने पूर्व जन्म में रत्नमाला है। In the other Puranas and other Samhitas, there is some kind of not the same conclusion what is her relationship with Bali Maharaj, but she has a relationship with Bali Maharaj. तो कुछ दूसरे पुराणों में और संहिताओं में कुछ भिन्न मत है कि उनका बलि महाराज के साथ क्या संबंध है, लेकिन सभी जगह उनका बलि महाराज के साथ कुछ न कुछ संबंध अवश्य बताया गया है। One says she is the daughter of Bali Maharaj, and the other one says she is sister of Bali Maharaj. कहीं लिखा है कि वह बलि महाराज की पुत्री थी, तो कहीं लिखा है कि वह बलि महाराज की बहन थी। So Bali Maharaj, if we can recall the story, whereby he became attracted to Vamana Dev. तो जैसे कि हम इतिहास जानते हैं कि बलि महाराज वामन देव से आकृष्ट थे। Vamana is the dwarf incarnation of the Supreme Lord. तो वामन देव भगवान श्री विष्णु के गौण अवतार हैं। Who is his father? उनके पिताजी कौन हैं? Kashyapa and Aditi, yes. So, Bali Maharaj is in the disciplic succession of the demons. तो बलि महाराज दैत्यों के समान उत्पन्न हैं। Right? Who is his grandpa or grandfather? उनके पितामह कौन हैं? Prahlad Maharaj. So, from Hiranyakashipu, the king of demons, Bali Maharaj came from. तो हिरण्यकशिपु जो कि दैत्यों के राजा हैं, उन्हीं के वंश में बलि महाराज प्रकट हुए। So, just to go back to the story, as soon as Ratnamala saw and had darshan of Vamana, because Vamana is so beautiful, so attractive. तो जैसे ही रत्नमाला ने भगवान वामन देव का दर्शन किया, तो वामन देव इतने सुंदर और आकर्षित थे। Yeah, Vamana is just like a 5-year-old boy in height. तो 5 साल के छोटे बच्चे के समान थे। But he's so beautiful, so attractive. So she thought, Ratnamala thought, oh, what a nice, beautiful child. I wish to someday to be also he like my son, and I will feed him with the milk from my breast. तो उनको देख करके वामन देव इतने सुंदर थे और आकर्षक थे, उनको देख करके रत्नमाला के मन में भाव आया कि किसी दिन मैं इसकी मां बनूं और अपना स्तनपान इसको कराऊं। So now she thought that Vamana cheated Bali Maharaj by asking only for 3 steps of land, but then Vamana took the entire universe. लेकिन जैसे कि आगे आप जानते हैं, वामन देव ने 3 पग भूमि की याचना की, लेकिन बाद में बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, पूरा ब्रह्मांड। And then Bali Maharaj, he cannot think of anywhere else where the 3rd step will be fall upon, and he offered himself, whereby Vamana put his 3rd step. तो दशा ये हुई कि बलि महाराज को पता ही नहीं चला कि हम तीसरा पग भगवान का किधर रखवाएं, क्योंकि 2 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया था। But still, he had to be punished because he only fulfilled 3 steps of land, but the head is not land. तो फिर भी उनको कुछ न कुछ दंड देना था, क्योंकि उन्होंने 3 पग भूमि की वादा किया था और उसको पूरा नहीं कर पाए थे। उनका सर कोई भूमि नहीं है। So he was bound and he was punished by Vamana Dev. उनको बांध लिया गया और उनको दंड दिया गया वामन देव। So now the mood of Ratnamala changed. रत्नमाला का भाव बदल गया। Instead of having that motherly affection, her mood changed that I'm going to avenge, that in the future I'm going to kill you.
तो पहले तो उसका मातृभाव था, लेकिन अब उसका भाव हो गया कि मैं आगे वामन देव से प्रतिशोध लूंगी। So this was the previous birth, right? तो ये पूर्व जन्म की घटना है। And now in the Krishna Lila, during the Dwapara Yuga, King Kamsa, who is the most atrocious king at that time, actually even at the time of the wedding of his sister, तो ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय कंस जो कि अत्यंत क्रूर राजा था, उसने अपनी बहन देवकी की शादी के समय Devaki, right? When he heard like a voice from the sky, Akash, उसने एक आकाशवाणी सुनी that the eighth child will be the cause of your death, he was ready to kill. He grabbed the hair of Devaki, took the sword from the sheath, and ready to cut the head. But then Vasudev says, no, 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 please, please. I'm ready to give whatever you ask for, even my own child, I will deliver to you. But please save the name, your name also. Save your name, and she's your sister. तो जैसी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस, तुम जिस अपनी बहन को ले जा रहे हो उसी का आठवां संतान तुम्हारा वध करेगा, उसने आओ देखा न लाओ। तुरंत एक हाथ में तो तलवार खींच ली और दूसरे हाथ में देवकी की चोटी, और उसने तुरंत निश्चय किया कि मैं मार दूंगा देवकी को। तो वसुदेव जी समझा बुझा करके देवकी के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि अपने यश पे विचार कीजिए, आपकी कीर्ति धूमिल होगी, तो आप जो कुछ भी मांगे मैं दूंगा, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी आपको सौंप दूंगा। So to make this short, the story short, yes, Kamsa agreed. Okay. So Devaki gave birth to the first son, gave to Kamsa. Kamsa killed. तो देवकी ने प्रसव किया, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को ले जाके कंस को दे दिया और कंस ने उसका वध कर दिया। Second, third, fourth, fifth, sixth. इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बच्चा भी मारा। Now the seventh child. Who is the seventh child? Balaram, Dauji Kabaya, Krishna Kabaya. तो सातवें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी को। Yes, and he was transferred to the womb of Rohini. Rohini. और उनको रोहिणी जी के घर में स्थानांतरित कर दिया गया। Who transferred? इसने Who made this? Yoga Maya. Yes, Yoga Maya. So now, Krishna took birth and Vasudev brought him to Gokul to be safe. But yes. श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और वसुदेव जी उनको गोकुल लेके आ गए, उनकी रक्षा की। Now, Mother Yasoda also gave child, actually two, not just one. तो मैया यशोदा ने भी युगल संतानों का प्रसव किया। The two Krishnas that Vasudev brought and the other Krishna, that Nandananda Krishna, Yasodananda Krishna, became one. वसुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण मिलकर के एक हो गए। And then there is the other child that Vasudev brought back, Yogamaya. जो दूसरी बच्ची थी योग माया, उसको वसुदेव जी वापस लेकर आ गए। So now, Yogamaya also, Kamsa wanted to kill, but she slipped away. तो योग माया को भी कंस मारना चाह रहा था, लेकिन वह उसके हाथों से फिसल गई। But he realized that Krishna already took birth in Gokul. उसको समझ में आ गया कि कृष्ण जन्म ले लिए हैं गोकुल में। That took birth and brought over there. He didn't have any idea that these two Krishnas became one. उसको समझ में नहीं आया कि वसुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण एक ही हो गए हैं। उसको ये लगा कि कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। So he made it. He was determined now to kill Krishna. वो कृष्ण को मारने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया।
And he is meditating always on Krishna. वो हमेशा कृष्ण का ही ध्यान कर रहा है। He is Krishna conscious, but in a wrong way. वो कृष्ण भावना से युक्त है लेकिन गलत प्रकार से। Rupa Goswami says one should think of Krishna. A pure bhakti means always remembering Krishna in a favorable way. तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण का चिंतन करना चाहिए लेकिन अनुकूल भाव से करना चाहिए। Yes. So what happened? He started to, because he's always afraid of himself to be killed. Kamsa started sending demons after demons and after demons. And the first demon that Kamsa sent to Gokul is Putana. तो कंस भयभीत था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी अथवा वह एक के बाद एक दैत्य भेजने लगा और प्रथम जो राक्षसी उसने भेजा वह थी पूतना। So now Putana, she is a Rakshasi. पूतना वो राक्षसी है। You know, demons, Rakshasis, they can change their appearance. They can be very beautiful. They can be big. They can do anything for their own purpose to damage or kill somebody. तो ये जो असुर राक्षस होते हैं इनके पास दैवी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दूसरों को मारने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। There are some Rakshasis. They can ride on a branch of a tree. They can take a branch off from the tree and they can say some mantras and they can ride on the branch. कुछ राक्षसियां ऐसी होती हैं जो पेड़ की टहनी लेकर के उसके ऊपर भी सफर कर सकती हैं। There are some of those in South India दक्षिण भारत में कुछ ऐसी हैं, or West Bengal बंगाल में भी, or in the Philippines. विदेश में भी। Yeah, was that Manananggal or something like that? You know, you can only see half of their body. उनका केवल ऊपर का धड़ दिखता है। But they're looking very fierce, very fearful, fearsome. दिखने में अत्यंत भयानक होती हैं Looking very ugly. और बहुत क्रूर भी होती हैं। But they have this mystic power to change their appearance for their own benefit, to do harm to others. लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उनके पास ऐसी स्थिति होती है कि वे अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। So now, this pastime happened only few days. Because Krishna is still young boy. He's not even learned how to crawl. Who was the next demon after Putana? Nahi. Sakatasura. Because Krishna started to crawl, right? तो अभी ये कुछ ही दिन था कृष्ण के जन्म के बाद, अभी वो खाली बकैया चल पा रहे थे, तो ये पहले पूतना है उसके बाद शक्तासुर। So now Putana changed her appearance to be a very beautiful woman, just like a celestial society woman from the heavenly planets, more beautiful than the heavenly planets' beauty. पूतना ने अपना रूप परिवर्तन करके बहुत सुंदरी देवी का रूप बना लिया, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से आई हुई कोई देवी है। So now, when she entered Gokul, everyone was so amazed at her beauty. They've never seen such a beautiful woman like her before. तो जैसे ही वो गोकुल में प्रवेश की, सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर आकृष्ट हो गए। किसी ने भी इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। Her intention is to feed Krishna milk from her breast, but at the same time having poison, smeared with poison, to ultimately kill Krishna. उसका भाव था कि कृष्ण को स्तनपान कराना, लेकिन स्तनों के ऊपर हलाहल विष लगाकर वो कृष्ण को मार देना चाहता। So when she entered the courtyard of Nanda Baba,
no one stopped her because she is so beautiful. Oh, she entered, even Mother Yasoda, Rohini Mata, all the gopis, when she entered the room where baby Krishna was lying down, no one stopped her. वह इतनी सुंदर थी कि जब वह नंद बाबा के आंगन में प्रवेश की तो किसी ने भी उसको रोका नहीं। वो बेधड़क अंदर घुस गई, यहाँ तक कि मैया यशोदा और रोहिणी माता ने भी उसको रोकना ठीक नहीं समझा और वह अंदर कृष्ण के पास पहुंच गई। So external appearance is dangerous. Sometimes. कभी-कभी बाहरी रूप में ही चले जाना इतना ठीक नहीं है। What is more important actually is the internal purpose. What is our intention? What is our agenda? तो ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारा भाव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं किसी भी कार्य में। So, but because Putana was disguised as a very beautiful woman, no one stopped her, and her purpose, main purpose, is to kill Krishna. This is the internal purpose. The external purpose is what? Every time there is a Leela of the Lord, everything that's connected with Him, there is Bahiranga, external reason, and there is an internal reason. All the time, every time. तो जब वे उतना आई कृष्ण को मारने के लिए तो उसका भाव था कृष्ण को मारना, यह आंतरिक कारण है। लेकिन बहिरंग कारण क्या है? कृष्ण की लीला होती है, उसमें दो प्रकार के कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। So she was very intelligent, isn't it? Disguising herself as a mother, having a motherly affection to feed Krishna milk, but internally to kill him. तो वो माँ के रूप में आई, वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने बाहर से तो माँ का रूप बनाया कि हाँ मैं कृष्ण को दुलार करना चाहती हूँ, लेकिन भीतर से वो कृष्ण को मार देना चाहती। And Krishna knows nothing can be hidden from Krishna. Nothing can be secret from Krishna. He knows everything. लेकिन कृष्ण से क्या छिपाया जा सकता है? वे तो सर्वज्ञ हैं। उनको पता था कि कृष्ण पूतना के आने का प्रयोजन क्या है। So Krishna let Putana come and to feed him, and he also, yes, I will also take milk from you. तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है पूतना आओ और मुझे अपना स्तनपान कराओ। But at the same time, Krishna took the life air of Putana. लेकिन दूध के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण वायु का भी आकर्षण करने लगे। So he fulfilled the desire of Putana, right? पूतना की इच्छा को पूर्ण कर दिया। Give milk, I take, but I also take your life away because your intention internally is very bad. ठीक है, तुम दूध पिलाना चाहती हो तो मैं दूध तो पीऊंगा ही, इसके साथ साथ तुम्हारी प्राण वायु को भी खींच लूंगा क्योंकि तुम्हारा भाव बहुत बेकार है। So, this is the mercy of Lord Krishna. यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। Well, we cannot do it ourselves. हो सकता है हम अपनी बुद्धि से बात ना समझ में आए। Eventually, though, when we chant the holy name of the Lord, whatever ill intentions we have to enjoy, to have possession, to many negative things, as long as we are chanting and don't stop chanting, even though in the beginning not sincerely, everything will change and improve and will become purified. ये भक्ति है, हम जैसे जैसे जप करते हैं, भले ही शुरुआत में हमारी संसार को भोग करने की बहुत प्रगाढ़ इच्छा हो अथवा बहुत सारी चीजों को हम अपने कब्जे में लेना चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम जप करते जाते हैं, यदि हो सकता है शुरुआत में हमारा भाव इतना शुद्ध ना हो, लेकिन धीरे धीरे भगवान सब चीजों को हटा दें। Yeah, this is the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chetodharpanamarjanam. The chanting of the holy name of the Lord is like cleansing the dirt. It's like the mirror. Our heart is like full of
anarthas. And then when we chant, keep chanting. It doesn't matter, you made offenses, but no Vaisnava. No. You cannot make advancement if you made Vaisnava. तो चैतन्य महाप्रभु का यही सिद्धांत है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान श्री कृष्ण का नाम चित्त रूपी दर्पण पे जमा हुई अनर्थों की धूल को नष्ट कर देता है। तो यदि हम जब करते रहते हैं, हो सकता है कुछ अपराध भी होते रहें, लेकिन हाँ, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध नहीं होता है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। As long as we're trying, we know we have shortcomings, we have so many material desires. You see, in the Krishna book or in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, around 22 demons or so were killed by Krishna, including also Lord Balaram. तो जब तक हम प्रयास कर रहे हैं भगवान का नाम जप करने का, हमको पता है कि अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन भगवान मदद करते हैं। कृष्ण बुक में बताया गया है कि कृष्ण और बलराम ने मिल करके 22 असुरों का उद्धार किया। Putana, these demons actually represents different anarthas. Anartha means unwanted. There's no need, unnecessary. तो ये जो 22 असुर हैं, ये अनेक अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनर्थ का अर्थ होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए। The more we chant the holy name of the Lord, the more we will see these anarthas start to come out from our heart. We think that, oh, I'm chanting good already, but no. The more we chant sincerely, without any offenses, all of these anarthas will come out and we will see what are those. तो जैसे जैसे कोई भगवान नाम का जप करता जाता है, तो उसके हृदय से अनर्थ निकलते जाते हैं। उस व्यक्ति को लग सकता है कि नहीं, मैं बहुत प्रामाणिक रूप से नाम जप कर रहा हूँ बिना अपराध के, लेकिन वो देखेगा जैसे जैसे वो प्रामाणिक रूप से जप कर रहा है, ये अनर्थ बाहर आते जाते हैं। So Putana, she represents, according to Srila Bhaktivinoda Thakur in his Siksamrita, that Putana represents pseudo guru. तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी ग्रंथ शिक्षामृत में बताते हैं कि पूतना कपटी गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। What does it mean by pseudo? Pseudo means pretender. तो सूडो जो अंग्रेजी शब्द है उसका अर्थ होता है कपट कपट करने वाला। Bogus, not genuine. अप्रामाणिक। Just wanted to take advantage of the disciples. जो केवल शिष्य से फायदा उठाने के चक्कर में रहता है। Just to make himself considering to have his disciples treat him as God. ऐसा गुरु ये चाहता है कि मेरे शिष्य मुझे भगवान के रूप में पूजा करें। That is the highest, that is the limit of being a pseudo guru. It's like there is a guru, you say, oh, if you think I am God, I must be God. तो ये कपट की पराकाष्ठा है। एक गुरु है बोलता था, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मैं भगवान हूँ, तो हाँ मैं भगवान हूँ। Well, what Prabhupada says, did he say that? No. What did he say? I am a servant of a servant of a servant. Koti Gopi Bharto Kapadamalayor Dasa 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 Anudasa. लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ। गोपी भर्तृ पद कमलियो दास दासन दास। Pseudo gurus means in the beginning they will act normal, but then later on they will jump over their own guru. तो कपटी गुरु का अर्थ है कि शुरुआत में तो सामान्य रूप से व्यवहार करेगा, लेकिन धीरे-धीरे अपने गुरु के ऊपर भी कूद जाना चाहता है। This is a very interesting topic or very interesting episode from the Srimad Bhagavatam. तो यह श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
1 hour is not enough. Of course, we spent already how many minutes here? Huh? 10 more minutes. It's not enough for me to explain, but the main point here is that the gopis, they were also praying for the protection of Lord Krishna, even though he is the protector of everyone. तो यद्यपि श्री कृष्ण सबके रक्षक हैं, लेकिन यहाँ पर गोपियां कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास करें। What's that verse? If Krishna wants to kill, no one can protect him. If Krishna wants to protect him, no one can kill him. What's that verse? Rake Krishna Mare ke, Mare Krishna Rake ke. यदि श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कौन उसको मार सकता है, और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है। But be very careful also, because this pseudo guru is not just external. तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कपटी गुरु केवल बाहर ही नहीं रहते हैं। Just like we're living in the world of the cheater and the cheated. तो इस जगत में लोग दूसरों को ठगना चाहते हैं और ठगाना। If you want to be cheated, there's a lot of cheaters. अगर आप जो है ठगाना चाहते हैं तो बहुत सारे ठग आपका इंतजार कर रहे हैं। Spiritual life is not so easy also. तो आध्यात्मिक जीवन इतना आसान नहीं है, It could be very, very difficult. बहुत कठिन हो सकता है कई बार। But others, they want spiritual life to be easy. कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक जीवन को बहुत आसान जानते हैं। But in Kali Yuga, it is not possible. One has to perform austerities. One has to perform sacrifices. One has to perform many, many things. Especially, one should chant the holy name of the Lord. कलयुग में इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या करनी होती है, बलिदान करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो विशेष रूप से भगवान के नामों का जप करना होता है। Without chanting the holy name of the Lord, we cannot go back to Godhead. And if we are criticizing devotees or others, even non-devotees, we cannot go back to Godhead. तो यदि हम भगवान नाम का जप नहीं करते हैं तो हम भगवान धाम वापस नहीं जा सकते। यहाँ तक कि यदि हम वैष्णवों को निंदा करते हैं या किसी की भी निंदा करते हैं तो वापस जाने का सवाल ही नहीं होता। So who is the pseudo guru within? तो भीतर में ये कपटी गुरु क्या है? Our mind. जो हमारा मन है वही कपटी गुरु। The mind may think, oh, I don't need guru also, because I can do anything and everything. My mind is telling me what to do. I know, I don't need anybody. तो मन बोल सकता है कि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। So he thinks he's doing good. No one can do anything. How he can change his mind? Sometimes a person is like this. He cannot change his mind. He trusts more his mind than others. तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति अपने मन पर इतना भरोसा करता है कि मन को बदलना ही नहीं चाहता है, चाहे बाहर लोग कुछ भी कहते हैं। But as a conditioned soul, we have 4 defects. लेकिन एक बद्ध जीव होने के कारण हमारे अंदर 4 कमियां हैं। What are our defects? Gopinath? Hey, Gopinath, Hare Krishna. Yes, our senses are imperfect. हमारी इंद्रियां अपटू हैं। We have a tendency to commit mistakes. हम गलती करने के आदी हैं। We have a tendency to be illusioned. हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। And we have a tendency to cheat others. और हमारे अंदर दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है। Putana was like this. पूतना भी इसी प्रकार की थी। But how come she attained a position to be like a mother or a nurse in the spiritual world? लेकिन ये कैसे हो गया कि आध्यात्मिक जगत में उसको माँ की एक धात्री की गति मिल गई? How is that? ये कैसे संभव है? Her intention was to kill Krishna internally.
Externally, her intention is to like be a mother to Krishna. बाहर से तो वह एक माँ के रूप में आई थी कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, लेकिन भीतर से तो भाव यही था कि कृष्ण को मार देना है. There is a verse in the S.Bhagavatam that was quoted by Uddhava, and it was repeated by Mukunda to Gadadhar. Remember that story in the Chaitanya Charitamrita? Yes? Yes. Aho, aho bakiyam stana kala kutam jighamsaya payayad api asadhi. Was that? Lebhe gatim datri uchitang tatonyam kamba dayalum saranang brajema. तो ये श्लोक पूरे ये उद्धव जी बोलते हैं भागवत में, और यही श्लोक मुकुंद बोलते हैं गदाधर पंडित को चरितामृत में. 3, Canto 3, 2nd chapter, text 23. And the meaning is, alas, who else is more merciful than he, Krishna? Though that unfaithful she-demon Putana smeared deadly poison on her breast and tried to kill him, she still attained a destination suitable for a nurse. तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से दयालु भला कौन हो सकता है. राक्षसी पूतना अपने स्तनों के ऊपर हलाहल विष लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण ने इसको नजरअंदाज करते हुए उसको धात्री उचित गति प्रदान कर. But Uddhava was stunned after hearing this verse. How merciful, how compassionate Krishna is, even though the motive was wrong internally and externally, still Putana achieved in the spiritual world that just the same motherly status as Yasodama. तो उद्धव जी अचंभित थे कि ऐसा कैसे संभव है कि भीतर का भाव इतना खराब है, कृष्ण को मारना चाह रही है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में उसको मैया यशोदा के समान धात्री की गति प्रदान कर दी. That was amazing, isn't it? But Putana did not become equal with Mother Yasoda or Mother Yasoda's position. See, the eternal associates of the Supreme Lord, they are always there and they cannot be replaced. तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं, लेकिन समझना होगा कि पूतना को मैया यशोदा के बराबर का दर्जा नहीं मिला. भगवान के नित्य परिकर होते हैं, वे सभी भगवान के समान ही नित्य रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा ले सकता है. So it'll be we should not misunderstand this, that Putana became like Mother Yasoda. Same equal level. तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैया यशोदा के समान पूतना का स्थान हो गया. So again, we'll go back to that pseudo guru, that we should not trust our mind unless what we're thinking is for Krishna, for the pleasure of Krishna, for the pleasure of his devotees, and not for my own benefit. तो फिर से हम कपटी गुरु पर वापस आते हैं. तो मन जो है कपटी गुरु है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताता रहता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि वो सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है. So remember the original wish of Ratnamala? तो आपको याद है रत्नमाला की पहली इच्छा क्या थी? What was her original wish? उसकी पहली इच्छा क्या थी? To feed Krishna, be Krishna like her own child. But then it changed. So it's still, even though there's like a mixture now of intention, what Krishna sees more is that the beginning wish, that desire of Ratnamala.
तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि रत्नमाला की पहली इच्छा थी कि वो कृष्ण को दूध पिलाना चाह रही थी। भले ही बाद में उसका भाव बदल गया, लेकिन कृष्ण ने उस गलत भाव को नजरअंदाज करके केवल अच्छे भाव को स्वीकार किया। But we must be very careful though. Oh, Maharaj says, oh, I can wish good first, and then later on I can change my wish, and then my first wish will be more followed. तो सावधान रहना चाहिए। महाराज बोल रहे हैं कि हाँ, पहले तो अच्छी इच्छा रखो, बाद में बुरी भी रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। We should always be trying to do everything for Krishna's pleasure, not for my own pleasure. हमको जो कुछ भी करना है केवल और केवल श्री कृष्ण के सुख का विधान करने के लिए ही करना है, अपने सुख के लिए नहीं। Or for Guru's pleasure. अथवा गुरु की प्रसन्नता के लिए। Or the Vaishnav's pleasure. अथवा वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। So in this way, hope against hope, Krishna will fulfill that desire and everything will be so smooth. Our going back to Godhead will be so swift that even in this lifetime, as Prabhupada says, we can go back home, back to Godhead. इस प्रकार अगर हम रहते हैं तो इसी जीवन के अंत में हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। Yeah, but along the road, there may be some disturbance along the way, but we should not be discouraged. If we are standing in Dharma or righteousness, sometimes there is some unwanted things that happens along the way, but don't give up. Keep going. Keep chanting. Keep hearing. Keep reading Srila Prabhupada's books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and yes, hope against hope. That will be able to go over these hurdles. इस बात में हो सकता है कि कई सारी समस्याएं भी आए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। यदि हम नाम जप करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, तो अवश्य ही हम इन सारी विपत्तियों के ऊपर पार हो जाएंगे, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। Have faith on Krishna always. हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। Have faith on Srila Prabhupada always. हमेशा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास रखिए। Have faith on our spiritual master always. हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु के ऊपर विश्वास रखिए। And have faith on the holy name always. और हमेशा भगवान नाम के ऊपर विश्वास रखिए। Hari Om Tat Sat. It's okay. Any question? Okay, one or two questions. Tell them we'll start 10 minutes more. 10 minutes ke baad. Okay, Hanji? Okay, good. Question. Is this chapter very deep. So much philosophy here. Yes. हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। आप सबसे लास्ट में बोले हरि ओम तत्सत, इसका क्या मतलब होता है? That means everything is finished, but you have a question, so is that your question? Hari Om Tat Sat. Everything is Om Tat Sat. Everything, once you say Om Tat Sat, you're completely satisfied. If someone is in perfect, will perfect. Everything is complete. ओम तत्सत का अर्थ है कि सब कुछ पूर्ण हुआ। It's like in the purport, there's unlimited names of Lord Vishnu, Sahasranam. जैसे तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के अनंत नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं। So when you say Vishnu, 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 all the names also are included. But when you say Hare Krishna Maha Mantra, everything is included in that Maha Mantra. तो जब हम विष्णु विष्णु कहते हैं 3 बार, तो मतलब भगवान विष्णु के सारे नाम हो गए।
इस प्रकार महामंत्र में भगवान सब कुछ है, सब कुछ उसी के भीतर है। I remember when we go preaching, book distribution in America, and we're traveling Sankirtan. So don't do this though, okay? You have traveling Sankirtan devotees here? Who goes out for book distribution? Okay, one, two, few of them. So because we don't have a good setup, so we stay in a van. Yeah, we sleep in the van, we eat in the van, and so when we offer something to Krishna, because we're on the move, sometimes devotees will say, Shiv Vishnu, Shiv Vishnu, Shiv Vishnu, and that will be considered as offered. तो कई बार हम लोग जब अमेरिका में प्रचार में जाते थे पुस्तक वितरण के लिए, तो संकीर्तन बस में ही सोते थे, वहीं पे खाते थे। तो भोग लगाने के लिए कई बार हाथ में भोग लेकर के बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और उसको जो है भोग लगा हुआ मान लेते थे। But don't do that, okay? ऐसा करना नहीं चाहिए। We have a special thing in America. Also, when we after eating, what do? You wash your hands, right? भोजन करने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, है कि नहीं? Before eating and after eating. भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोते हैं। So now when we're traveling and the car is moving, how can you wash your hands? Sometimes the water will just... So what we do, we'll just put our hands outside of the window, because in the Bhagavad Gita says, what? Of the purifier I am the wind. Yes, air. Yes. तो कई बार जब हम लोग बस में जाते थे तो हाथ खा के हाथ कैसे धोएं, क्योंकि पानी बाहर फैल जाता है, तो खिड़की के बाहर हाथ कर देते थे। भगवान बोलते हैं कि पवित्र करने वालों में पवन हवा हूं, तो उससे हाथ धो। And the purifier of everything is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भगवान नाम सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला। Any question, Gaurangi? No question? Huh? Okay. Haribol. Yes. Hare Krishna. Haribol. Yes. When you say Dandabat Pranam, you have to fall flat. Yes. You cannot say Dandabat standing. Okay. Okay, but while Bhagavatam class is okay. No problem. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो सब जानते हैं भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ है और उड़ीसा में रथयात्रा निकालते हैं, लेकिन उनको हम कैसे प्रैक्टिकल समझें? मेरा अवतार में कि भगवान डायरेक्ट जगन्नाथ का रूप में आए हैं, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज रहते हैं, हमको क्वेश्चन करते हैं, उनको हम कैसे समझाएं कि वही कृष्ण जगन्नाथ जी है और जगन्नाथ जी नीलाचल में जगन्नाथ का रूप में लीला करते हुए भक्त का साथ। Are you from Orissa? जय जगन्नाथ। Jai Jagannath. Jai Baladev. Jai Subhadra. Question is that in Nilanchal Lord Jagannath is present. So how do we tell people that Jagannath is Krishna only? Huh? That Jagannath is Krishna. Well, Jagannath also is called what? Lord of the universe, Jaghannath. जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। So by the meaning itself, who can be the Lord of the universe? Only God, only Krishna. इसके अर्थ मात्र से ही समझ जाना चाहिए कि केवल कृष्ण ही जगत के नाथ हो सकते हैं। Okay? All right. Well, you explain the meaning, and you can explain also the story of Lord Chaitanya Mahaprabhu when he arrived in Jagannath Puri in the mood of a devotee, Shrimati Radharani, that he fell unconscious. He was in ecstasy to see God, to see Krishna. तो ये जगन्नाथ शब्द का अर्थ बतला सकते हैं और ये घटना भी बतला सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में भक्त के भाव में गए तो भगवान का दर्शन करके वे मूर्छित हो गए। And if he cannot understand, give him Jagannath Mahaprasad. और फिर भी
नहीं समझता है तो उसे जगन्नाथ का महाप्रसाद खिलाते हैं। Jagannath's Mahaprasad travels all over the world. The only prasadam that travels all over the world. And when you see this container, made of leaves, palm leaves, you can tell, hey, that's Jagannath Mahaprasad. तो जगन्नाथ महाप्रसाद पूरे विश्व में भ्रमण करता है। जब वो आप बांस का एक डब्बा बनाते हैं उसमें देखेंगे तो समझ जाइए कि ये भगवान का एक महाप्रसाद। It says that even Jagannath Mahaprasad being eaten by a dog or eaten by a diseased person, if you have full faith that that is Jagannath Mahaprasad, it will not affect you if you eat that after a diseased person or a dog. It's still purified. तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र होता है कि चाहे उसको कुत्ता खा ले अथवा कोई रोगी व्यक्ति खा ले, उसके बाद अगर कोई खाता है तो वो पवित्र हो जाता है, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। Yes. Who any of you entered Jagannath Mandir in Puri? Raise your hands. आप लोग में से कितने लोग जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश किए हैं? Yes, Gaurangi. You too. I raised my hand because I also entered Jagannath Mandir in Puri. मैं भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। Jagannath Kripa. जगन्नाथ की कृपा। But I was not wearing lal kapra. मैं उस समय में लाल कपड़ा नहीं पहना। We went with the devotees from Mayapur nighttime because Jagannath doesn't sleep. The only deity that doesn't sleep. So I went there with the white dhoti and a banyan. Banyan, the cut off like those pilgrims. Yeah. तो मैं उनके भक्तों के साथ गया था, सफेद धोती पहना था और ऊपर एक बनियान पहन लिया था। Lord Jagannath's mercy, he travels all over, even in the West, and we have Ratha Yatras there all summer long. Of course, in India, we are prohibited to do it except certain dates, but in America, they do it all summer, every week. जगन्नाथ की कृपा है कि पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, जगह जगह रथ यात्राएं होती हैं। भारत में थोड़ा सा प्रतिबंध है, केवल कुछ समय में ही हो सकता है, लेकिन और जगह जो गर्मियों का सीजन होता है। That's why it's called Patita Pavana. इसलिए उनको पति पावन कहा है। Even the most fallen, if they have seen Lord Jagannath, they become purified. कितना ही पतित क्यों ना हो, एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है तो पवित्र हो जाता है। And for those who cannot enter Jagannath temple, Patita Pavana is there. You can see in the corner, right? You've seen Patita Pavana in the corner? Yeah, in the Singhadwar gate. Yes. और जो लोग भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, वे बाहर से सिंहद्वार से वे पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। Okay, we're talking about prasadam. You must be hungry by now. प्रसाद की चर्चा हो रही, आप लोग भूखे हो गए। Shri Krishna ke, Putana ke. But don't be like Putana, okay? Jagannath Swami ki, Baladev Subhadra Maharani ki, Vidaya Go Sitana Premanande. Hari Om Tat Sat. Dhanyavad. Hare Krishna. Mm-hmm.